Jai Shriman Narayan. Good morning, kids. We are going to discuss the JEE Mains 2025, 24th shift, one morning shift. Paper moderate or better you can call easy and formula based. अब तक जो भी शिफ्ट हो चुके हैं, तीन शिफ्ट हो चुके हैं एंड उसका 6 पेपर हो चुके हैं. Almost all questions very, you can say moderate, paper moderate. डिफिकल्ट कैसे बोल रहे हैं हम लगे लेंदी कैलकुलेशन. यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी कौन सा भी पेपर अभी तक नहीं आया फिजिक्स में, और बाकी 6 पेपर्स अभी बाकी है. वो भी यू कैन एक्सपेक्ट द सेम थिंग लाइक फॉर्मूला बेस्ड एंड यू शुड बी गुड इन ऑल द थ्योरी. तो जितना होता है आप अपना थ्योरी पढ़ लो एंड जितना होता है उतना फॉर्मूला मेमोराइज कर लो. यू कैन मैनेज दीज एग्जाम्स वेरी कंफर्टेबली. पेपर अब तक तो वी कैन कॉल इट एज इजी, डिफिकल्ट इन सेंस लेंदी कैलकुलेशन. तो कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी कौन सा भी पेपर अभी तक नहीं आए, और बल्कि आउट ऑफ 25 में एक दो या एक क्वेश्चन शायद टफ रहेगा, बट रिमेनिंग 23 और 24 मैनेजेबल. तो बाकी बचे तो जो शिफ्ट है, प्लीज रिवाइज ऑल द थ्योरी एंड फॉर्मूलाज. दिस इज द गेम चेंजर. कुछ भी आपको डरने का जरूरत नहीं है, जस्ट रिवाइज फॉर्मूलाज एंड जितना होता है उतना पढ़ लो. नो नीड टू सॉल्व PYQ. Even PYQ also may not be useful now at this stage. So we'll start the paper discussion. Okay, good morning, kids. This is the JEE Mains 2025, 24th morning shift or shift 1. मैं आपका श्रीधर सर, फिजिक्स लेक्चरर. यहाँ पे हम JEE Mains का पेपर डिस्कशन करेंगे. जस्ट विल ऑल्सो डिस्कस यहाँ पे एनालिसिस भी कर लेंगे, लाइक what was the level of paper, everything. Thanks for great support, the journey in which I am moving, and lot of support is coming. Thank you very much. We'll start the paper discussion. यहाँ पे पहला question, the RMS value. So this particular topic, alternating current. If IA equal sin omega t IB con, then the RMS value of current is. अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो यू कैन मैनेज दिस वेरी इजीली. और एल्स आपको क्या करना है, लाइक यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ द बेसिक डेफिनेशन. व्हाट इज IRMS? IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ IA sin omega t IB cos omega t होल स्क्वायर dt 0 to t dt 0 to t. इसका एक्सपेंशन कर लेंगे. इसका एक्सपेंशन होने के बाद, सो दिस फर्स्ट विल, इसको एक्सपेंड करना पड़ता है हमें. देन दिस शुड बी इक्वल टू 1 by t RMS स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हुआ IA स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt 0 to t IB स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t 0 to capital T dt. थोड़ा छोटा कर लेता हूं स्क्रीन. Then plus this will be IA IB 2 sin omega t cos omega t dt 0 to capital T. इसका इंटीग्रल वैल्यू IRMS स्क्वायर 1 by t. The integral of this one, इसका वैल्यू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t dt will become 1 by 2. Okay, agreed. Then बाद में IB स्क्वायर, इसका इंटीग्रल वैल्यू cos स्क्वायर ओमेगा t इसका वैल्यू cos स्क्वायर ओमेगा t. This will also will become 1 by 2 plus IAB integral of 2 sin cos omega t. This value of this will be 0. और जब आप इंटीग्रेट करेंगे
So this should become 0. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैसे 0 होगा? ये तो आपको पता होगा, लाइक साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका एक्सपेंशन कितना होगा? कॉस 2 ओमेगा टी डी टी बाई 2, तो 1/2। ये तो बाहर आ चुका है। सो इंटीग्रल ऑफ डी टी 0 to t, integral of cos 2 omega t will be 1/2 omega sin 2 omega t। इसका तो वैल्यू t है, 0 to कैपिटल T। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका तो t एंड इसका तो 0। दिस अ बैकग्राउंड आपको शायद पता होगा, so directly I'm writing it. So therefore, what is the integral of sin square omega t will be t/2। यहाँ पे डाल देंगे t/2, t/2। This will be 0. Then this will become IA by root 2 or IA square by 2 t IB square by 2 plus this will be 0. The value will be IA square plus IB square by 2। ये वाला हमारा आंसर। प्रॉब्लम टॉपिक, द टॉपिक इज बेस्ड ऑन द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में अगर आपको हायर एमएस पता है तो देयर इज अ मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। बेस्ड ऑन द रोटेशन मैकेनिक्स, रोटेशन मोशन, सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन? यहाँ पे हम एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। सॉलिड सिलेंडर, इट इज रिलीज्ड, देन व्हाट आर द फोर्सेस हियर? यहाँ पे mg sin theta, फ्रिक्शन, mg cos theta, normal contact, theta। देन जो mg sin theta minus f will provide the acceleration of center of mass। Fine, this will provide the acceleration of center of mass। Then torque is set up only by the friction, because you have to discuss the torque about this point. Only the friction will set up torque। Torque due to mg cos theta, normal reaction, and mg sin theta will be 0। So the net torque will be here like this, will be anti-clockwise। This will be an anti-clockwise। Okay, fine। So now what is the equation? यहाँ पे mg sin theta minus f equal to me, f into r equal to center of mass IC alpha। Solid cylinder, इसका moment of and pure rolling, AC equal to r alpha। F into r, moment of inertia mr square by 2, alpha will be AC by r। So F का वैल्यू कितना होगा? MAC by 2। इसका यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। Acceleration of center of mass, let it be AC। AC equal to 2g sin theta by 3। Okay, fine, this is rolling। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहे तो फाइन, गुड, और एल्स यू हैव टू डिराइव। These are the rotational mechanics rolling on inclined plane, very simple। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन तो
in the square loop of side length 1/2 limit, a current of 5 ampere is flowing. Find the magnetic field at its center. यहाँ पे center में कितना magnetic field है? What is the current? Current का direction यहाँ पे दिया है. This is the current direction. We have to calculate the magnetic field at the center. We have to calculate the magnetic field at the center. यहाँ पे what is the center? Center हम यहाँ पे O बना लेंगे. At point O आपको यहाँ पे magnetic field find out करना है. इस square loop में. So let this be theta, alpha, beta. और कौन सा भी ले लो. This is alpha, this is beta angle, and this is the perpendicular distance. So what is this diagram? डायग्राम हम एक बड़ा वाला ले लेंगे. एक बिगर डायग्राम I'll draw it. The same thing. इसको I'm redrawing it. This is alpha, this is beta, this is the perpendicular distance b. यहाँ पे current I flow हो रहा है. Okay, now what is the magnetic field is centered due to one of the wire. B equal to mu naught I 4 pi d sin alpha plus sin beta. 4 pi. D का वैल्यू कितना है? So D will be L by 2. Total length of the wire is L. So D का value will be L by 2. Sin 45 degree plus is sin 45 degree. So total magnetic field कितना हुआ ना? The total magnetic field will be, फिर से या कैलकुलेशन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. So this will be 2 pi L. Value sin 45 degree will be 1 by root 2. 1 by root 2 will be 2 by root 2. So इसका कुल मिला के now this will be pi L root 2. बाद में करंट कितना है? 5 एम्पियर. पाई L का वैल्यू तो 1 by root 2. So this also will cancel. Mu naught 4 pi into 10 to the power of minus 7. Mu naught का वैल्यू into 5. यहाँ पे pi 20 into 10 to the power of minus 7. Net field will be 4 times of B naught. Net field पूछ रहे हैं. So कितना है? Like net field will be how much magnetic field will produce this wire. Same magnetic field AB produce करता है. Like same magnetic field AB produce करता है. Same magnetic field AB, this will also will produce. So net field will be, let me adjust settings. I think visible, complete visible होता है. Yeah. Now net field. So what is the magnetic field is produced? जितना magnetic field ये produce करे, same magnetic field is produced by these 4 wires. So net field चारों के वजह से, like what is the net field? Net field will be 4 times of B naught. 4 into 20 into 10 to the power of minus 5. This will be 8 micro Tesla. So B net value will be 8 micro Tesla. Just based on the magnetic field due to finite wire. What is the name of chapter? Magnetic effects of current, and the subtopic name is Biot-Savart law. तो अगला क्वेश्चन ले लेंगे. For ideal
monoatomic gas undergo an isobaric process. Delta Q equal to delta U. Isobaric process. In isobaric process, what is the pressure? Pressure will be constant. Okay, fine. Pressure will be constant. Agar pressure constant rahe to then delta Q equal the ratio of delta Q by delta U. So what is the delta Q? Should be equal to NCP delta T. What about delta U? NCV delta T. And this will become Cp by Cv, which is gamma. Monoatomic gas. Monoatomic का gamma कितना है? Will be 5/3. और gamma को पता नहीं. At least we'll start with the Cv. Cv will be 3R/2. And Cp will be 5R/2. So total will become 5/3. This topic is based on the thermodynamics. Thermodynamics and isobaric basic process. Isothermal, adiabatic, isochoric. अगर आपको just like a जो sir what is CV? CV कैसे ले CV equal to FR/2. Monoatomic gas degree of freedom कितना है? 3. So 3R/2. So CP minus CV equal to R. CV कितना हुआ? 3R/2. तो इससे हमें CP मिलेगा 5R/2. वही मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर चुका हूँ. और मेयर्स इक्वेशन, ये तो मेयर्स इक्वेशन and there's a basic formula from KTG और gaseous state chemistry से. all simple theory formula based है. इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी जरूरत नहीं है. जितना होता है उतना theory पढ़ लो, formula रिवाइज कर लो. More than sufficient for JEE Mains. I will take the next question. So I should tell what is जो reality है वही बात करता हूँ. No need to solve साला के important questions. वो भी जरूरत नहीं है. जितना होता है उतना theory पढ़ लो, एग्जाम जाओ, you can manage. Electron of mass m. Let me read question. An electron of mass m enters in a region of uniform electric field E equal to E0 at T equal with an initial velocity. If the de Broglie wavelength is lambda naught initially, the de Broglie wavelength at time t. What is the direction of electric field? यहाँ पे थोड़ा हम rectangular coordinate system draw कर लेंगे. This will be y-axis, x-axis. This will be z-axis. Minus E0 k. So यहाँ पे E bar is into the plane. And the particle electron बोल रहे, it is having velocity v0. The de Broglie initially इसका wavelength कितना है? lambda naught. उससे हमें initial velocity मिलेगा. The de Broglie wavelength at a time t, after some time t. यहाँ पे in what direction the electrostatic force will act in this direction. Sorry, it will act in this direction. इसका path charge particle, इसका path इस तरह होगा. After something, it will move in XZ plane. बाद में it will be like this: Vx and Vz. This will be V. Vz to parallel. Vx to change नहीं होगा. It will remain V0. What is Vz? Vz equal to simple. We can apply the basic conservation of angular momentum. Then इसके लिए क्या करेंगे हम? Just kinematics, not conservation of angular, kinematics. Sorry. So ये Vz किस लिए आता है? So this electrostatic force will accelerate it. So इसका हम Vz after some time t, Vz equal to Az into t. Az का value तो q E0 by mass of electron m into t. The de Broglie wavelength at time t. This was the question asked. So then what is the net speed? The net speed will be Vx square plus Vz square. So Vx square will be V0 square. Vz square will be QET by M0
Q means charge of electron. Q means charge of electron. Okay, this will be Q naught. ये तो हुआ हमें हमारा so E naught. Then so what we do is asking new de Broglie wavelength H into MV. यहाँ पे simplify करेंगे M. This will be V naught square Q square E naught square T square M naught square. We'll take V naught outside 1 plus H by MV naught will become lambda naught. Okay, this will be our option. What is this topic based on the matter waves? De Broglie matter waves. Very simple concept is only this one. Yeah? Just डरने के no need to worry. इसमें डरने का कुछ भी नहीं है. Like lambda equal to h by m naught. सर मुझे de Broglie wavelength पता नहीं है कैसे होता है क्या होता है. Not needed for exam point of view. Lambda equal to h by mv. Momentum of particle. Any particle having mass or possesses the momentum will have the de Broglie wavelength. Possesses momentum. Photon को भी de Broglie wavelength रहता है. So अगर आपको this basic formula याद रहे तो you can manage it. बाकी ये तो kinematics है. No need to draw this diagram also. इसका diagram का भी जरूरत नहीं है आपको. There is no necessity of this diagram. मैं तो यहाँ पे explain करने के draw कर रहा हूँ इसको. Sir, why it will take path like this? आपको पता है कि there is a velocity and the force. It will start moving in a parabolic path. Then at any instant of time, z component is due to electrostatic force. X component, there is no force, so velocity remains as it is. The vector sum of this. Then simple idea. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. The distance between two parallel plate of a capacitor is d. If we then find the energy stored in capacitor, I think this is the most easiest question. यहाँ पे capacitor draw कर लो. Distance between the plates कितना है d a and E is electric field. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो गो फॉर एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. देन एनर्जी कितना, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला. This is called energy density formula. So energy equal to energy density into volume of epsilon naught E square. Volume of this capacitor will be A into D. So epsilon naught E square AD by 2. This is the energy of capacitor. This will be your answer. So the problem is based on the capacitor chapter. Basics of capacitor, energy of capacitor, वो भी याद रहे तो you can manage. Energy of capacitor is Q square by 2C. यहाँ पे E कितना है? E is Q by A epsilon naught. C equal to कितना हुआ? F naught A by D. I think you can manage. A भी substitute कर लो. For that you'll get answer in terms of E. There's a basic formula for energy of capacitor. No need of paper discussion. ये जो हालांकि आप खुद theory पढ़ लो and start using जो भी theory है, you can manage. Paper तो very easy. A particle of next question. A particle of mass m is projected with initial velocity v at an angle 45. Find angular momentum at highest point. So ये तो projectile. There's a ground and we are projecting it with a speed u at an angle. At highest point इसका कितना होगा? Velocity u cos theta. Vertical component तो change होता रहेगा. U sin theta, u cos theta. Then यहाँ पे angular momentum पूछ रहा है. So this will be h. About what point? About point 2. What is the formula? L is equal to r bar cross mv bar.
आर बार तो वेक्टर ए हुआ आर बार, देन दिस विल बी आर एम बी सम साइन फाइव रख दो इसको. व्हाट इज फाइव? एंगल बिटवीन आर बार एंड वी बार. सो आर साइन फाइव इसको अलग कर दो, एम बी आर साइन फाइव. So from the diagram, sin phi is equal to h by r. This one, this one. This is r bar. This is v bar. So what is the angle? A over this angle phi. This. Sin phi कितना हुआ now? Sin phi is equal to h by r. So r sin phi will be h m. V का वैल्यू कितना है? U cos theta. What is h equal to? U square sin square theta by 2g. So what is the angular momentum now? About 0.2. Magnitude पूछ रहे हैं. So m u q sin square theta. यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. m u q sin square theta cos theta by 2g. थीटा वैल्यू, थीटा तो 145 है. m u square 2g sin square theta 1 by root 2 whole square और बाद में 1 by root 2. mu cube by 20 root 2. लेट मी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, जगह नहीं मेरे पास. ओके, एल नॉट. सो इसका एम यू क्यूब हुआ रूट टू होल स्क्वायर. रूट टू होल स्क्वायर मीन 1/2 440 इंटू जी रूट टू. जी का वैल्यू कितना? 10. तो एम यू क्यूब बाय 4 इंटू जी विल बी 10 40 रूट टू. That you only are making V naught. There's a formula. So topic based on the kinematics and also on the rotation motion. There's a formula. And बाकी बचे सो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए. एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आर क्रॉस एम वी एंड उसके बाद मैक्सिमम हाइट असेंडेड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. अगर ये दो फॉर्मूला याद रहे तो यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन. ये तो बाकी सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. A particle is performing SHM of amplitude and time to find the ratio of distance traveled by the particle in कितने टाइम में? Like is asking in 12.5 सेकेंड. तो यहाँ से t equal to 0 स्टार्ट होगा. देन कितना टाइम लेगा? Like 2 seconds for one oscillation. तो कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर. तो t को 0 यहाँ पे स्टार्ट हुआ, 2 सेकेंड्स यहाँ पे 12.5 सेकेंड्स. तो इसके लिए तो 5 राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा. सो दिस विल बी तो 2 सेकेंड्स 4 seconds, 6 seconds, 8 seconds, 10 seconds. 12.5 ना. So one more last. कितना हुआ? 12 seconds. 0.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस करता है? कितना? लाइक 2 seconds. तो 12.5 seconds तो यहाँ पे आ जाता है. यहाँ पे काउंट कर लो कितना डिस्टेंस है. डिस्टेंस कितना होगा?
ये तो लगे in one oscillation it will be 4. यहां तक आने के लिए कितना ऑसिलेशंस कंप्लीट करना पड़ता है? 6 ऑसिलेशंस. तो ईच ऑसिलेशन में डिस्टेंस कवर कितना है? In each oscillation S naught will be 4 centimeter. Then how many oscillations? Each oscillation यहाँ पे 2 seconds है, 6 oscillations complete करता है. So इसके लिए तो the distance covered will be 6 S naught, बाकी 1 centimeter, 0.5 second में 6 into 4 plus 1. So this will be 25 centimeter. No need of formula. आपको बेसिक एसएचएम का अगर कॉन्सेप्ट याद है तो कैन मैनेज. दिस इज वन ऑसिलेशन. तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 4 सेंटीमीटर. बाद में दिस इज अनदर ऑसिलेशन. कितना डिस्टेंस कवर हुआ यहाँ तक? तो 8. देन आफ्टरवर्ड्स दिस इज वन मोर ऑसिलेशन. ऐसे काउंट कर लेते जाओ. सो विल गेट ए बेसिक पिक्चर. प्योरली डायग्राम बेस्ड. अगर आपको ए डायग्राम इमेजिन करना आता है तो देयर बी स्टिल मोर, नो नीड टू ड्रॉ डायग्राम. काउंट कर लो कितने ऑसिलेशन है. 1 2 3 4 5 6 ऑसिलेशन. और बाद में 0.5 सेकेंड में इट विल मूव फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम. तो कितना डिस्टेंस कवर होता है यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर. और कितना टाइम लेता है? 0.5. सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 24 प्लस 1 विल बी 25. This concept is based on SHM, a simple harmonic motion. Kinematics of SHM subtopic. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. What is relative focus shift of focal length of when optical power is increased from 0.1 D to 2.5 D? यहाँ पे हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं. नो, आपको तो पता है पावर इक्वल टू 1/f. हम पहले F1 कैलकुलेट करेंगे. 0.1 D. 0.1 D. इसका कितना है? 1 D है. इसका फोकल लेंथ डायोप्टर. So this will become 10. F2 equal to 1 by power P2, 2.5 diopter. So this will be 10 by 25. So shift, relative shift. So ये हुआ F1 minus F2 by F1. 1 minus F2 by F1. F2 का value 10 by 25. And this one will be F1 का value 10. 1 minus 1 by 25. So 24 by 25. This will be relative change in the focal length. Relative, sir, यहाँ पे what is the meaning of relative? Relative बोले तो what we should think? Relative shift of focal length change minus initial, that we'll call relative shift. We'll take the next question. Problem based on ray optics. So this topic is ray optics lens. Subtopic name is lens. There's a problem based on the surface tension. A drop of radius r is split into 27 equal drops. यहाँ पे बड़ा वाला ड्रॉप है. इसको हम स्प्लिट करेंगे. कितने ड्रॉप्स में स्प्लिट होगा ये? 27. ड्रॉप का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 27. इसका रेडियस 9 होगा स्मॉल आर. The work done is, if the same big drop is split into 64 equal drops, the work done.
या तो हमें सरफेस एरिया के बारे में थोड़ा वर्क डन इक्वल टू surface tension to change in area. So 24 will be the volume 4/3. यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब. There's a 4/3 pi r cube. This should be equal to 27 into 4/3 pi r cube. This is a conservation of mass. Density same रहेगा, mass तो same रहेगा. So therefore the volume will be conserved. So r cube 4/3 तो cancel हुआ. This will be 27 r cube. बल्कि r will become equal to, this will be 3 cube into this one, r equal to 3r. So r का वैल्यू कितना है? r/3. What is the work done? पहले सिचुएशन में work done equal to surface tension into change in surface area 4 pi r square minus 27 4 pi r square. What is the concept? Concept is based on the surface tension. Work done equal to surface tension into change in area. So 4 pi outside ले लेंगे, r square minus 27. Smaller का वैल्यू कितना है? r/3 whole square. इसका फिर से कैलकुलेट करेंगे. r square भी 12 आ जाएगा. 1 minus 27/9 will be 3. So this will become 8 pi r square t. So final minus initial लेना पड़ता है मुझे. Actually I took initial minus final. Final actual minus initial. Okay, fine. I should take final minus initial. Okay, no problem. It will be actually positive. Then इतना हुआ. So what is the work done? So this is equal to 10 joule पूछ रहे. Now इसी को हम 64 ड्रॉप में स्प्लिट अप करते हैं. अगर हम इसको 64 ड्रॉप में स्प्लिट अप करेंगे, One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9. This is 64. Call this is a radius. Then mass will be conserved. 4/3 pi r cube should be equal to 64 into 4/3 pi a cube. R cube equal to 4 cube into a cube. So r equal to कितना हुआ? 4a. So a equal to 4 by r/4. Then work done is equal to surface tension into change in area. 64 into 4 pi a square minus 4 pi r square. 64 into 4 pi t. 4 pi t बाहर ले लेंगे. 64 a का वैल्यू will be r/4 whole square minus r square. 4 pi r square t. 8 minus 7. 64 by 4, 16. 64 by 16 will be 4. Okay, it is only 4. So this will become 12 pi r square t. Work done how much? Now pi r square t, what we can write? Pi r square t will be 10/8. इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. pi r square t will replace with this. So 10/8. So this will be 3 into 10/2. 15 joules. A very good question. थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस है. सर लगे ये वाला what is the basic idea जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं? This is about the conservation of mass. Total mass will remain same. जितना भी mass है, the same mass. Liquid mass of liquid will not change. No? Then density will remain constant. So therefore, the volume should be conserved.
the same thing. There's a concept. बाद में the formula work done equal to surface tension into change in area. There's another formula you should remember. Huh? There's also simple theoretical question, huh? Not something conceptual. It's not conceptual, just theoretical information. अगला question ले लेंगे. In a process, the gas pressure in a process, pressure of gas is directly proportional to temperature. Then the choose correct option. If the pressure of gas is directly proportional to temperature, PV equal to nRT. P and T are constant, so then V equal to nRT by P. T by P is constant. So ये तो हुआ volume constant, volume भी constant होगा. So then the process will be isochoric. In isochoric process, work done will be 0 and delta U is equal to NCV delta T. I think directly यहाँ पे तो isobaric process के बारे में पूछ रहे हैं. Thermodynamics concept. Process is isochoric type statement. Work done is 0. Delta U equal to NCV delta T. So यहाँ पे तो सभी options correct है. We'll pick up this one. Pure theoretical information. जो भी पढ़ते हो वही आ रहा है एग्जाम में. No need to practice. No need to practice important question. No need to practice PYQ also यहाँ पे. जितना आप तेजी पढ़ते हैं फॉर्मूला याद करो एग्जाम जाओ बस एंजॉय. ये वाला क्वेश्चन. Force F equal to alpha plus beta x square is acting on a body which displaces it 0 to 1 meter. If the total work done process 10 joule, find the value of beta given alpha equal to 1. So this is a simple mathematical F bar dot dx. Alpha beta x square dx. Then this will be from where 0 to 1. X 0 to 1, beta x cube by 3, 0 to 1, alpha into 1, beta by 3. This is also 1 cube, minus 0 cube. So कुल मिला के this will be alpha beta by 3. Work done का वैल्यू कितना है 10 जूल. 10. अल्फा का वैल्यू कितना है 1. बीटा के बारे में पूछ रहे हैं. So beta will be 27. There's a formula. There's a topic based on work per energy. And work done by variable force subtopic. And ये तो basic formula अगर सभी को याद रहेगा. If a force is variable, then we have to go for integral of f dx. And force and displacement are in same direction. So therefore the angle between them is 0. Cos 0 will be 1. Next, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सर्कुलर मोशन बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन. बैंक रोल आपको क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही द वर्ड से आपको टॉपिक को एस्टिमेट करना पड़ता है. बैंक रोड पूछ रहा है. बैंकिंग कौन सा टॉपिक में सर्कुलर मोशन में आता है. तो ऑन ए बैंक रोड car is moving with maximum velocity in circular path. Find the value of V naught if quotient of friction is mu. अगर फॉर्मूले याद रहे तो you have to pick up option, नहीं तो यहाँ आपको डिराइव करना पड़ता है. What are the method? लगे हम यहाँ इस तरह कर लेंगे. ये तो बैंकिंग. जैसे कार को ही हम जैसे एक ब्लॉक जैसे दिखा रहे हैं. जो भी फोर्सेस एक्ट होता है एन देन एम जी साइन थीटा. यहाँ पे एम जी कॉस थीटा. देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर आर और एम वी नॉट स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. फ्रिक्शन तो डाउन द रोड.
You can resolve ये तो problem आप आपके मर्जी से लेके. You can do this in any possible way. ये वाला तो थीटा होगा. We'll just resolve the forces along x, along y. This will be, or along the incline, parallel to incline. It's left to you. So यहाँ पे road कौन सा है? This the road. और ये वाला vehicle, car. So we'll resolve along the incline. इससे पहले n will be n minus mg cos theta mv naught square by r sin theta equal to 0. This is normal to incline. A wala to normal. This will be parallel. Parallel to road, better. Normal to road, parallel to the road. Parallel to the road, mv naught r square cos theta minus mg sin theta minus f equal to 0. What is f? F equal to mu n. mv naught square r cos theta बाद में इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे. cos theta minus mg sin theta. n का वैल्यू तो एल सब्स्टिट्यूट है. म्यू mg cos theta minus mv naught square r sin theta. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं. ओके, विल डू वन थिंग, इसको हम बाहर निकाल देंगे. तो म्यू विल बी, यहाँ पे एम तो कैंसल हो जाएगा. b naught square cos theta r minus g sin theta by g cos theta. ये तो प्लस हुआ ना, प्लस b naught square r sin theta. यहां से हम will take some further simplification. cos theta कॉमन ले लेंगे. Find the value of v naught. Okay, sorry. v naught के लिए simplify करना है. I didn't see question properly. v naught के लिए simplify करेंगे. This will be v naught square r cos theta minus sin theta equal to mu sin theta और g sin theta plus mu cos theta. So v naught will be r तो यहाँ पे है. Cos theta also will take common. So this will become g tan theta. g भी बाहर आ जाएगा ना. mu g cos theta. So g r tan theta plus mu 1 minus mu tan theta. ए बी फॉर्मूला है, अगर याद है तो ओके, और एल्स यू हैव टू डिराइव इन एकदम. थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन है. सर व्हाट इज दिस? यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं, दिस इज पैरेलल टू रोड. वी आर इक्वेटिंग फोर्सेस पैरेलल टू द रोड, नॉर्मल टू द रोड. यहाँ पे एन mg cos theta इसका कंपोनेंट. पैरेलल टू द रोड, फ्रिक्शन mg sin theta एंड component of this. Equating and solving for v naught.
This will be so based on the circular motion. So these are our option. Banking of road. I think there's also diet formula is there. Better to remember things and go to the exam. A wire of resistance 9 ohm is bent to form equilateral triangle. यहाँ पे वायर है, इसको हम बेंड करेंगे. इसका 3 ओम 3 ओम 3 ओम रेजिस्टेंस ऐसे रख दो बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स. ए वाला तो पॉइंट हुआ. सो ए बी सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों 3 विल बी सीरीज में. इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ? 6 ओम 3 ओम ए दिस इज बी. RAB equal to 6 into 3 by 6 plus 3 18 by 9 2 ohm. What is the concept? Concept is based on current LCT series parallel. Let's just series parallel. आपको ये डायग्राम जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है. बिना डायग्राम आप कुछ नहीं कर सकते. इसके लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश नॉलेज भी चाहिए. जस्ट सिंपल वायर ऑफ रेस्ट बेंट इनटू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. जो भी रेजिस्टेंस का वायर है कितना 9 ओम उसको हम इक्विलेटरल टाइम बेंड करके अक्रॉस साइड्स में व्हाट इज द रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस. द इंटरप्रिटेशन चाहिए लेके बिना डायग्राम आप लेके वी कांट थिंक. क्वेश्चन इज वेरी इजी बट थ्रू डायग्राम ओनली वी कैन मैनेज. टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहे हैं. सो टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट देयर इज अ वन सेटेलाइट. There's another satellite. यहाँ पे satellite R, another satellite. What is the radius? 1.03 R. Satellite 1 orbital velocity v1. Satellite 2 इसका orbital velocity v2. What is the time period formula? T1 equal to 2 pi R cube by gm. You have to really make this problem very easier. Gm by R square will become Rg. ये वाला होगा टाइम पीरियड. सो यहाँ पे सर व्हाट हैपन, यहाँ पे हम आर स्क्वायर बाई जी एम को जी रिप्लेस करेंगे. देन दिस विल बिकम आर बाई जी. दिस व्हाट द थिंकिंग यहाँ पे. सो व्हाट इज द टॉपिक नेम सर? ग्रेविटेशन एंड द टू सैटेलाइट्स. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. सो व्हाट इज द T1? T1 इज दिस मच. व्हाट इज द टाइम पीरियड? T को 2 पाई इसका इस तरह लिख दो. The time period of B is greater than A by. So T2 equal to 2 pi. 2 pi RG, we can write it as T1, no? So by what parameter it is greater, पूछ रहे. So how to calculate that greater? Hello kids, like yeah, तो this one we are getting percentage means we'll end up with delta T1 by T1 1.4%. We don't have option. The option 1 is given. The reason like we can solve by the other one. So we know like a time period T is equal to 2 pi R cube by gm. So therefore T1 square equal to 2 pi R cube by gm. Then T2, the radius will be 1.03 times of R whole cube by gm. So this will become T2 square or T2 square by T1 square equal to R cube by this will be 1.03 R cube.
This will be T1, this is T2. So therefore T2 should be equal to 1.03 whole cube. 1.03 whole cube into T1 cube. So T1 square, T2 square. So T2 is equal to 1.03 3 by 2 T1. Now we have to consider the effect of that one. Even G also varies, depends on R. So this will become approximately T2 equal to 1.03 into 3 by 2. Change is asking delta T is equal to T2 minus T1 by T1. पहले delta T calculate करेंगे. So this will become 1.03 3 by 2 T1 minus T1. We have to calculate T2 no. एक काम करेंगे. One 1.03 to the power of 3 by 2. It's equal like a cube root of this. Yeah, तो हमें this one we have to calculate. हम call alpha. So this will become T2 by T1 minus 1. T2 by T1, how much it will be? 1.03 to the power of 3 by 2 minus 1. इसका cube, that's very small. So 1.03 into 3 by 2 minus 1. So this will get around 4.5% when we solve. A little bit mass calculation. Why means even the G also depends on capital R. This will be correct approach. This one is correct. This one is wrong. We'll take the next question. Which of the following will increase the capacitance by a factor? By factor of 10. L का value पहले कितना है 3. So capacitance earlier value of capacitance will calculate. Epsilon naught A by D. Area of cross section will be 3 centimeter square. Separation is 3 micrometer. And A वाला तो centimeter square था. The new capacitance which will increase by 10 times. 10 C naught ले लेंगे. Then epsilon naught A by D. So कौन सा इसमें satisfy होगा? 10 to power of minus 4, A वाला 10 to power of minus 6. यहाँ पे epsilon naught A D L and B का value. So what is A? A तो L and B ले लेंगे. epsilon naught तो cancel हो चुका है. So 10 into 3 cancel हुआ. So into 10 to power of 2. That everything should satisfy this one, the values of L and B. So it will satisfy this one. अगर आप A ले लेंगे, it will satisfy this one. There's also a simple formula based. The topic is based on the capacitors. शायद I think दो questions है. एक maybe like a very order collected. दो questions may not ask from same topic. अगला वाला. Electron jump from principal quantum state by releasing photon wavelength and from state B releasing photon. The final wavelength of the photon from transition A to B. When it makes a transition from, we'll draw the quantum states. A, electron jump from principal constant A to C.
ए टू सी का वेवलेंथ कितना है? विल बी lambda AC. Lambda AC is how much? 2000. And B2C, the transition is how much? Lambda BC, 6000. From A to B, what is the wavelength? Is asking. So energy, delta EAC should be equal to delta EAB plus delta EBC. Now delta EAB is asked. So delta EAC minus delta EBC should be equal to delta EAB. Delta EAC will be H by lambda AC, H by lambda BC, HC by lambda AB. SC will get cancelled out. Lambda AC is 2000 minus lambda BC will be 6000 equal to lambda AB is being asked. So solving this will end up with 3000. There's a problem based on atoms, excitation of hydrogen atom concept. So this diagram is very important. अगर आप एक diagram draw करोगे, little bit easier for you. यहाँ से आप equation ये ले सकते हैं, the energy. Then energy equal to SC by lambda. Solving this, we'll get this one. We'll take the next one. This is based on the experimental physics. The topic name is experimental physics, screw gauge. Initial least count of screw gauge is 0. Then its pitch is increased and number of divisions is increased by. Find the new least count. So what is the least count? Least count will be the pitch by number of divisions. Pitch is increased by new least count. The new least count के बारे में pitch is increased by 75%. Increase it by 70%. So this will become P dash by N dash. Increase by 75% means delta P equal to P dash minus. It is increased by 75%. So P dash का value कितना हुआ ना? P plus 0 also like it will be increased by 1.75 होगा no? P plus 0.75. So will become 1.75. Decrease it by 50%. Will become N dash will become 0.5. So this will become 1.75, 0.5. Least count इसका value कितना है? 0.01 millimeter. 0.001 millimeter into 1.7 by 0.5. This will become 0.0035 millimeter. You have to, this idea, increase it by, like this, we'll get it. I think it's mass. There's only, what is the concept? Concept to, there's the concept. Least count equal to pitch by number of circular division. बाद में this everything is mass. जो मैं लिख रहा हूँ. We'll take the next question. In YDAC, two lines of wavelength lambda 1, lambda 2. Find the minimum number of lambda 1s which will coincide with any maximum of other color. Now this is about the like a chromatic light, YDAC with chromatic light. That concept is what we are applying. Now this will be two lights of wavelength which will coincide. So coincide के लिए this is a condition. N2 lambda 2 by capital D. So this will become N1 lambda 1 equal to N2 lambda 2. Okay, then N1 का value कितना है? N1 पता नहीं. Lambda 1 will be 480. Lambda 2 will be 600. So N1
480, 600. This will be 8 and 10. So this will be 4 and 1 equal to 5 and 2. Find the number of lambda ones which will coincide with this one. N1 by N2. N1 should be equal to 5, N2 equal to 4. So the option will be fine. Based on the way of optics. So what is this like a coincide? जितना like a जो भी like a magma side n1 equal to 5 will merge with n2, find the minimum number of lambda ones which will coincide with any maxima of other color. There are 5 maximas of lambda 1 which will merge with the 4 maximas of the lambda 2. There's a meaning there. Merge bolte. Coincide means merge. Find the ratio of focal length of lens and liquid to that in air if the lens is made up of material and the whole system is dipped in a liquid. Find the ratio of focal length of lens in a liquid to that in if the lens is made up of material. Focal length. Earlier यहाँ पे हमारा एक लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले म्यू दिस इन है, इसी को हम क्या करेंगे, नाउ वी विल डिप दिस इन ए लिक्विड, देन इसका फोकल लेंथ के बारे में पूछ रहे, तो म्यू म्यू ये तो चेंज नहीं होगा म्यू, देन सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम है, वी आर इमर्सिंग दिस इन ए लिक्विड. This is a liquid and the whole system is dipped in liquid of refractance. इसका focal length पूछ रहे, इसका हम f1 करेंगे, इसका f2 करेंगे. What is f1? f1 is equal to 1 by f1 equal to mu minus 1 by r minus of minus 1 by r. Value इसका तो value 1 by f1 mu 1.5 minus 1 2 by r, then f equal to r. ओके फाइन. नाउ बाद में इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे 1 by f2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बाद में सराउंडिंग लिक्विड का कितना है 1.2 minus 1 by r minus of minus 1 by r. This will be 0.3, 15 by 2, 5 by 5 by 3, 5 minus 2 by 3, 15 by 12, 5 by 3 होगा, 5 by 5 by 3 minus will be 2 by 3. 2 by 3 into this will be again 2r. r का वैल्यू f1 रख देंगे. Find the ratio of focal length in liquid to that in air. In liquid में कितना है f2 है, f2 equal to 3f1 by 4. So f2 by f1 कितना हुआ now 3 by 4. 5 by 5 by 3, 5 by 3 minus 1, ये तो 2 by 3 हुआ, so 2 4 by 3. इसका वैल्यू कितना 1 by 2, 1 by 2 into 2 by r will become only 1 by r. So f1 equal to r. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, ये वाला कैलकुलेशन ये तो 1.5 5 by
5 by 4, 5 by 4, 5 minus will be 1 by 4. यहाँ थोड़ा गलती हुआ, तो ए वाला टोटल हुआ 1 by 2r, 1 by 2 f1. तो f2 by f1 पूछ रहे हैं, f2 by f1, f2 by f1 will be f2 equal to 2f1 will be 2. थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे गलती हुआ. Okay, this is based on the ray optics lens maker formula. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. Find the radius of curvature. Refraction spherical. A system is dipped in the liquid of mu equal to 1.2. Focal length of system in the liquid is 0.2. Find the radius of curvature. And this is based on the refraction spherical surface. And then find the radius of curvature. You have to calculate the value of r. What is the method? No, this is the lens, and it's a silver lens. This is immersed in a liquid. इसका तो refractive index. Dipped in liquid, find the focal length of system. The focal length of system बोल रहे. So this everything इसको हम immerse कर चुके हैं. कहाँ पे? Liquid में. Very good question, huh? Yeah, very good question. Silver lens in a liquid formula, simple idea. ये जो वाला हुआ liquid है, इसका तो mu है, mu l कर देंगे. The system is dipped in a liquid. Mu naught इसको कर देंगे, इसको mu कर देंगे, that of the liquid. So this everything is equal to again. ये जो everything will become concave mirror है. इसका फोकल लेंथ कितना है? 0.2 मीटर माइनस. ये तो कॉन्केव मिरर ही होगा. देन व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली इसको हम रिप्लेस क्या करेंगे? लेंस इमर्स्ड इन ए लिक्विड प्लस प्लेन मिरर. ये तो बाद में कॉन्केव मिरर होगा. देन दिस एवरीथिंग इस तरह, बिकॉज द प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड. हमें एफ पता है, so we have to get this r, mu naught. Find the radius of curvature. So यहाँ पे हम फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 1 by f equal to 1 by fm minus 2 by fl. fm तो a हुआ and this is fl. 0.2 meter, so in centimeter कर लेंगे. So this will be minus 20. ये तो r will be infinity by 2. Radius of curvature इसका तो infinity है. 2 by fl का वैल्यू mu naught रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. काम करेंगे mu l, इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu g ग्लास दिया है. लेट मी यूज सिंबल्स. तो इसका तो mu g बाय mu l माइनस 1 by r माइनस 1 by r. 1 by fl का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो दिस विल बी माइनस 1 by 20, 0 minus 2. mu g का वैल्यू 1.5, 1.2 minus 1, 2 by r. तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो चुका है. सो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. दिस विल बी रेडिया इसका. Okay, next question. So this problem based on the ray optics silver lens concept. Silver lens idea. I have to go to college. मेरे को टाइम हो रहा है, तो 2 क्वेश्चन अभी मैं फिनिश कर देता हूँ.
Gauge pressure inside air bubble is 2100. Sufficiency of the bubble is T. Find 100 T. No, there's a liquid. यहाँ पे गेज प्रेशर पूछ रहे हैं. So where is the air bubble? A वाला air bubble. Then यहाँ पे pressure P1 equal to P2 plus 2T by R. P2 will be P0 plus rho GH. P2 means pressure यहाँ पे. This is the air and pressure inside P1. Gauge pressure means P1 minus P0. इसको हम gauge pressure बोलते हैं. Pressure minus P0 will become gauge pressure. इसका वैल्यू कितना है? Gauge pressure 2100 equal to rho density of water 1000 G10. H will be 20 centimeters 0.2 2 into sufficiency पता नहीं. Then radii of the bubble 0.1 centimeter 0.1 into 10 to the power of minus 2. 100 T is asking, so this will be 100 T will be fine. Okay, fine. So these are the some questions what I collected 2025 24th January 24th shift morning. The paper is called as easy and formula based. यहाँ पे आपको around to score 99 percentile. If you score around 65 marks, no, in physics it will be 99 percentile. Okay, bachos. So this was about the 24th January morning shift. The paper is easy. So 99% के लिए आपको करीब around 60 to 65 marks अगर आप score करोगे तो then you will end up with 99 percentile. So paper like is a purely formula based. So just आपको theory अगर formula याद रहे तो you can manage. इसमें से around 2-3 question hard है, 2 question hard है, बाकी बचे so 23 are very easy. The simple theory and formula based. Okay, now we'll see the this one 28 morning shift paper. Shortly I'll upload it. Thank you all of you. Good morning, kids. Today's class we are going to discuss the 24th January evening shift JEE Mains 2025. Paper is moderate and lengthy. It's not tough, it's lengthy. So you should be good in formulas, and you should have a good conceptual background. And paper is lengthy. एक एक क्वेश्चन 3 या 4 5 लाइनें. तो द फास्ट रीडिंग एबिलिटी ऑल्सो आपके पास बहुत ज़्यादा चाहिए. लेट मी स्टार्ट द पेपर डिस्कशन. फ्रॉम 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट पेपर डिस्कस कर रहे JEE Mains 2025. आई एम योर फिजिक्स लेक्चर श्रीधर सर. I will start with the paper. So the first question, Young's double slit experiment. So the question is based on YDSC here. Let me write the name of chapter. YDSC. Young's double slit interference apparatus is immersed in liquid of refractoriness 1.44. It has slit separation of 1.5. The slits are illuminated by parallel beam of light whose wavelength in air is, this is a wavelength, this is a refractor index, this is slit separation. The fringe width on a screen at a distance of 0.72 meter. So we are having this is slit. Parallel beam of light is incident. Lambda. The slit separation is D. And this is the यहाँ पे screen है. And a complete setup is immersed in a liquid. This whole setup is immersed in liquid. ये तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा. सो नो आफ्टर दिस यहाँ पे
फ्रिंज विड्थ के बारे में पूछ रहे हैं। इसका वेवलेंथ इन एयर इट विल बी लैम्डा, यहाँ पे लिक्विड इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला तो लैम्डा कैपिटल डी बाय म्यू इंटू डी। व्हाट इज द म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। यहाँ पे लैम्डा कितना दिया है? 690 नैनोमीटर, 10 to power of -9, 0.72। द डिस्टेंस डी है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.4। 1.4 separation 1.5 into 10 to power of -3। so जब हम सॉल्व करेंगे so this will become 2-3 millimeter। you should be very good in calculations। यहाँ पे so there's a problem based on YDS here। तो आपको YDSC तो पता ही होगा। so the problem is based on the YDSC wave optics। the topic name is wave optics, chapter name wave optics, and it is based on the YDSC। so there's a formula। a formula आपको याद रहना चाहिए and there's a basic background diagram। यहाँ पे fringe width, what do you mean by fringe width? यहाँ पे हम like these are the dark fringe, इसको हम fringe width कह सकते हैं। और W और this one, the distance from the center of white fringe to next white fringe, or from the center of dark fringe to next dark fringe, this is called like a fringe width। ये थोड़ा background आपको याद रहना चाहिए, this is very important। and there's a formula to calculate the fringe width। I will take the next question। okay, the next question is it is based on the electromagnetic waves। chapter name is EM waves, electromagnetic waves। Arrange the following। so let me read the question। arrange the following in the ascending order of wavelength। यहाँ पे microwaves, ultraviolet, infrared and x-rays है। choose the most appropriate answer from the following given options। इसमें से कौन सा ऑप्शंस है? so हम यहाँ पे वेवलेंथ स्पेक्ट्रम आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। so what is the wavelength? अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्पेक्ट्रम, जब आप ड्रॉ करेंगे so मैं जस्ट बेसिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूँ। रफ डायग्राम। फर्स्ट यहाँ पे आपको गामा 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 रेज स्पेक्ट्रम में, बाद में एक्स रेज, देन उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और बाद में इसका रेडियो वेव्स। दिस इज द वेवलेंथ। सो अब जब देखेंगे तो लाइक वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स, यहाँ पे माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ कितना है? λ1। अल्ट्रा वायलेट का कितना दिया है? λ2। इंफ्रारेड गिवन λ3, एक्सरेज गिवन λ4। so λ4 greater than λ2 greater than λ4 less than λ4 less than λ2 less than λ3 less than λ1। ये तो लाइक दिस इज स्पेक्ट्रम।
तो आपको ये स्पेक्ट्रम याद रहना चाहिए। अगर आपको स्पेक्ट्रम पता है तो द स्पेक्ट्रम विल बी वेरी इजी फॉर यू। EM waves में they'll ask very simple questions, वेव प्रोपगेशन का, स्पेक्ट्रम के बारे में, देन इंटेंसिटी ऑफ वेव, पावर ऑफ ए वेव, हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ EM wave, when EM wave propagating along x-axis, how E bar and B bar will be in phase, how they'll be directed. yeah? So it takes 1 hour। अगर आप 1 hour में EM waves एक बार पढ़ के, और every day 5 minutes if you can remember formulas, revise formulas, डेफिनेटली एग्जाम में कौन सा भी प्रॉब्लम आने दो, यू कैन मैनेज। तो पहले आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए, एक बार पढ़ के समझ लेना चाहिए, देन रिवाइज द रिमेंबर फॉर्मूलास, बाद में PYQ। बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप जितना भी प्रॉब्लम करेंगे वो उतना फायदा नहीं होगा एग्जाम को। ओके फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर। ओके, असर्शन रीड करता हूँ। Electron in certain region of uniform manifold is moving with constant velocity in a straight line path। यहाँ पे assertions का हम ये कर लेंगे, electron and it is moving with a straight line path velocity of electron is moving with a constant velocity। यहाँ पे magnetic field है, so when it will move with a constant velocity, if velocity is parallel to the B bar, no, if then only this is possible। यहाँ पे electron is moving, so then definitely what should happen to the electron should move parallel to the magnetic field, then only it goes in a straight line। There's a basic condition, electron in certain region in uniform magnetic field is moving with a constant velocity in a straight line path, then this can happen only when velocity of electron is parallel to B bar। so what is the basic formula? यहाँ पे formula आपको QVB sin theta, theta 0 degrees and 180 degrees, for these two conditions only a possible होता है। then next reason, the magnetic field in that region is along the direction of velocity of electron in the light of above statement। I think both सही है ना, reason assertion भी correct है, reason भी यहाँ पे correct है, so we'll pick up option 2। so even our assertion is correct and the reason is also correct। okay fine। दिस अबाउट जस्ट मोशन ऑफ चार्ज पढ़कर। सो कौन सा चैप्टर का है लगे, मूविंग चार्जेस and magnetism, and it is based on this particular formula, F equal to QVB sin theta, charge moving in a uniform magnetic field। We'll take the next question। A solid sphere is rolling without slipping on a horizontal plane, the ratio of the linear kinetic energy of the center of mass of sphere and rotational kinetic energy। This is based on the rotational mechanics, rolling motion। यहाँ पे रोलिंग मोशन में पूछ रहा है। सो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगे, सो दिस इज द सॉलिड स्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास C, वेलोसिटी V एंड ओमेगा, इट इज हैविंग प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मीन्स V इक्वल टू R ओमेगा। velocity of point P will be 0। What is the velocity of point P? V minus R omega is equal to 0, then only it will become pure rolling। यहाँ पे हमें the ratio of linear kinetic energy of center of mass of sphere to linear kinetic energy, linear kinetic energy means translational, और बाद में इसका rotational। translational kinetic energy कितना होगा, mv square by 2, rotational kinetic energy I c omega square। moment of inertia calculate करेंगे,
2/5 mr². बाद में ए टू टू कैंसल हो रहा है, देन ओमेगा वी कैन राइट इट v²/r². इसका तो टोटल 5/2. फॉर प्योर रोलिंग सर यहाँ पे लाइक व्हाट इज द बेसिक आइडिया, लाइक यहाँ पे हम ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग v इक्वल टू आर ओमेगा. सो जहाँ पे ओमेगा है देन वी कैन राइट इट एज v/r. just rolling, simple सा idea. Rolling for pure rolling, velocity of point P will be 0. For forward slipping, vp greater than 0 for forward slipping, vp less than 0 for backward slipping, vp equal to 0 for pure rolling. This is the concept. एंड जब रोलिंग होता है इस दो एनर्जी रहते हैं, उसके दो तरह के काइनेटिक एनर्जी रहते हैं. एक ट्रांसलेशनल ड्यू टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक रोटेशनल. सर लगे व्हाट इज द बेसिक आइडिया इसके बारे में, लगे जब आप कौन सा तो गाड़ी जा रहा है उसका एक पहिया तुम देख लो, लगे व्हील. व्हील क्या लगे, व्हील अबाउट सेंटर ऑफ मास जो भी पॉइंट से वो घूमते रहता है. एंड सेंटर ऑफ मास अलग से जाते रहता है, अलग से इट विल बी मूविंग अलोंग द रोड स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे दो तरह के काइनेटिक एनर्जी होते हैं, एक ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. इसका रेशियो पूछ रहे हैं. टोटल काइनेटिक एनर्जी मीन सम ऑफ दिस टू. आई थिंक सिंपल कॉन्सेप्ट है. इसके लेके आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत भी नहीं है. लाइक थोड़ा बहुत आपको theory याद रहते, यू कैन मैनेज दिस थिंग्स. एंड दिस अ बेसिक आइडिया. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. नाउ दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ. Ampere circuit law, and the question is based on Ampere circuit law and moving charges and magnetism. This is a chapter name, this is a subtopic, Ampere circuit law. A long straight wire of a cross sectional, यहाँ पे हमें एक long straight wire है. इसका रेडियस कैपिटल R होगा. कैरिंग करंट है. What is the question? A long straight wire of cross section with radius A. इसका रेडियस ए बना लेंगे. Then carries a steady current I. The current I is uniformly distributed across this cross section. Plot magnitude of magnetic field with distance up from center. I think बहुत सारे लोग इसको शायद पढ़ चुके होंगे. डायरेक्टली इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन मैनेज इस तरह के क्वेश्चंस. दिस इज सिंपल दैटली थेटिकल वन. इसके लिए लाइक टीचर जब पढ़ा रहे तो द नोट्स लिखते हो ना, दैट नोट्स इज वेरी इनफ फॉर जेईई मेंस. जितना बार तुम उस नोट्स को तुम रिवाइज करोगे उतना क्लैरिटी आपको आ जाएगा. उसी क्लैरिटी से आप जब PYQ सॉल्व करते हो, हर एक प्रॉब्लम जब सोचते हो ना, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड इन जेईई मेंस. एग्जाम कम लिखो बट जितना होता है उतना टीचर नोट्स रिवाइज कर लो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. जेईई मेंस के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो तुम पढ़ चुके हो वो याद रहना चाहिए. देन सॉल्व PYQ. पढ़ना ज्यादा है, यू हैव टू रिवाइज मोर. 60% ऑफ टाइम रिवाइज टीचर नोट्स, 40% ऑफ टाइम सॉल्व PYQ. लास्ट 5 years हर एक PYQ करने का जरूरत नहीं. लास्ट 5 years का. ओके, विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. सो मैं पहले वायर ले लेता हूं. पहले अंदर इसके अंदर में कैलकुलेट करेंगे. इसका रेडियस A, यहाँ पे विल अज्यूम रेडियस स्मॉल r. टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इन रेडियस ऑफ I, इन रेडियस ऑफ A, टोटल करंट इज I. ए जो सर्कल हम डाल रहे हैं ना, इसके अंदर में कितना करंट जा रहा है. तो विल कॉल दिस इज I.
then current density we define it, I by pi a square. Then इस क्रॉस सेक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है इस रीजन में, तो उसके लिए हम I इक्वल टू जे इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हम करंट इस तरफ लाइक इनटू द प्लेन एज्यूम कर लेंगे. देन हियर बी बार एंड डीएल. सो एम्पियर सर्किट लॉ, हम जो फील्ड फाइंड आउट करें दिस इज द इनसाइड इनसाइड द, इसको B1 यूज कर लेंगे. सो दिस विल बी integral of B1 bar dot dr equal to mu naught. Net current enclosed is I. How much of current enclosed by this circular region of radius R? That is what I. Then हर जगह B bar is parallel to DL everywhere. B bar like this DL. So what is the angle between B bar and DL? It is 0 everywhere. Or DR or DL. I'll make it DL. So B1, this will be DL. What is value of I? J pi r square. So what is the integral of ऐसे छोटे छोटे pieces है जिसको आप ऐसे join कर लेते जाओ. So then what do we get? We get circle of radius r, no? So इसको हम B1 2 pi r mu naught J pi r square. B1 equal to mu naught J r by 2. So this field will increase linearly. यहाँ पे आप outside we know, outside it will be decreasing. Outside, what is the formula for outside due to long wire? Mu naught I by 2 pi r. So ये जो दो formulas है, based on this we have to calculate the we have to pick up the suitable option. Inside the wire it is 0 at the axis, and आप जब away from the center जा रहे हो, away from the axis जा रहे हो, इसका magnetic field increase होता है, that too linearly. Then outside the wire, totally somewhere here outside the wire it will be B bar proportional to 1 by R, rectangular hyperbola. So we'll pick up this particular graph. This will be our option. Okay, fine. So this will be our key. I think एग्जाम में इतना भी सोचने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आप पढ़ चुके होंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्मली चार्जिंग करंट, यूनिफॉर्मली कैरिंग करंट, बी प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड ड्यू टू लॉन्ग वायर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा, बस देखते ही आप ऑप्शन यहाँ पे पिकअप करना है. Now we take the next. This question is based on the thermodynamics. यहाँ पे thermodynamics है. Assertion: in an insulated container, a gas is adiabatically shrunk to half of its initial volume. The temperature of gas decreases. Reason: free expansion of ideal gas is an irreversible and an adiabatic process. So इसके लिए तो आपको just you need the basic. In adiabatic process, what is adiabatic process? TV gamma minus 1 equal to constant. Or T1 V1 equal to T2 V2 gamma minus 1. Half of its initial volume. Temperature of gas decreases. So क्या होता है? टेम्परेचर देख लेंगे. इसका तो वॉल्यूम ऑफ हो गया. देन T2 इक्वल टू T1 1 by gamma minus 1 to the power of gamma minus 1. Gamma is greater than 1. So definitely T2 will become greater than T1. No? यहाँ से मैथमेटिक्स चेक कर लो एक बार. So but यहाँ पे डेटा क्या दिया? The temperature of gas decreases. No, there is a final temperature. It increases. So this is the false.
This is a false. बाद में, okay, we'll take the free expansion of ideal gas. Free expansion of ideal gas is an irreversible and an adiabatic process. What is the free expansion? Means no work is done by the gas. Huh? Free expansion हम एक पिस्टन ले लेंगे, massless piston, यहाँ पे गैस है. It will expand a massless piston. Then definitely यहाँ पे the gas will push this piston, P1 P into A. Pressure से P1 into A. This will become P2 into A. अपने आप खुद रिटर्न नहीं आ सकता है दिस पिस्टन सो यहाँ से दिस फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन यहाँ पे मूव हो रहा है. व्हाट इट मेक्स टू मूव द प्रेशर फोर्स. देन बाद में अपने आप पिस्टन रिटर्न नहीं आ सकता है. देयर इज अ मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल तो अपने आप पिस्टन रिटर्न अगर आ सकता है तो देन इट बिकम रिवर्सिबल. इट्स नॉट पॉसिबल. So free expansion, what happen? It can be adiabatic, it can be isothermal. But is staying adiabatic, okay, we can expect. But it's irreversible. Free expansion is an irreversible process. Best example, अगर आप perfume bottle, the thing is like it contains the perfume, or some petrol something, it gets evaporated. Reversible or irreversible? It's a irreversible process. जो भी पेट्रोल एवापोरेट होता है वो अगेन लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकता है ना. देयर इज अ मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल. So this is the true statement. So we'll pick up that one. Assertion is false, reason is true. Like a very good question. Sir, can it be isothermal? S. अगर आप temperature constant रहे तो it become isothermal also. Free expansion we can have adiabatic or isothermal. But irreversible is a compulsory. Okay. अगला क्वेश्चन. This is based on the electrostatics. The question is based on electrostatics. Then what is actually in the configuration 1? इसको हम configuration 1 बोल रहे हैं. Shown in figure. 4 identical charges. यहाँ पे एक चार्ज है Q0, Q0, Q0. यहाँ पे कॉर्नर में है. Kept at corners, ABCD of square of length है. In the second configuration, यही charges को हम mid point पे यहाँ पे रख रहे हैं. The same charges shifted to midpoints of GE, midpoints GEHF. The difference between potential energies of configuration 2 and 1. इसका हम potential energy पूछ रहे हैं. So this will be potential energy इसका U2 बोल दीजिए, इसका U1. U2 minus U1 यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है. The difference पूछ रहे हैं. So delta U equal to directly यहाँ पे लिख दीजिए. What is U2? This distance is very important. इसका हम distance कैलकुलेट करेंगे. इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये तो लेंथ, स्क्वायर लेंथ ऑफ साइड ए पूछ A/2, ए वाला तो A/2 है. इसका डिस्टेंस R. यहाँ पे लेंथ कितना है? साइड लेंथ इज ए. R इक्वल टू, पहले R कैलकुलेट करेंगे. R इक्वल टू A²/4 प्लस A²/4. A²/2 A/√2. ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. डिस्टेंस बिटवीन इसका भी R है, इसका भी वैल्यू R है, इसका भी वैल्यू R है. सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 4 times K Q0² by R. आपको फॉर्मूला शायद याद रहेगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंट्रैक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे कितना इंट्रैक्शन हो रहा है? लाइक there'll be interaction between the sides. This is also very important. This is not the answer, my. There's interaction. Okay, एक काम करेंगे.
ये चार्ज 1 है, इसका एक नाम डाल देंगे 1 2 3। कितने इंट्रैक्शंस यहाँ पे हमें, ओके फाइनल इनिशियल, एक I'll change the symbol, huh? It'll be easy for us. फाइनल इंट्रैक्शन में U12 U13 U14, देन उसके बाद में U23 U34 U23 U24 and U34. U12 value will be k q naught square r. U13 का value will be k q naught square by a. U14 का वैल्यू होगा k q naught square by r. U24 का वैल्यू होगा k q naught square by a. U34 का वैल्यू होगा k q naught square by r. 3k q naught square by r plus 2k q naught square by a. r का वैल्यू कितना है, a by root 2. सो यहाँ पे हम ओके काम करेंगे, दिस इज द, पहले यूएफ कैलकुलेट करेंगे. So k q naught square by a. This will become 3 root 2 plus 2. R का वैल्यू कितना है, a by root 2. a हुआ फाइनल, इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. सो वी हैव टू लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ पे भी द सेम मेथड है. इंट्रैक्शन 1 2 3 4. U12 dash, U13 dash, U14 dash, U23 dash, U24 dash, U34 dash. U12 dash k q naught square a. U13 dash a root 2. U14 U23 U24 k q naught square by a root 2. Separation between 2 and 4 and 1 and 3 is root a root 2. वो यहाँ पे हम एज्यूम करें. U34 will be k q naught square by a. Four plus 2 by root 2. इसका हम कैलकुलेट करेंगे. रूट 2 2 माइनस 2 रूट 2. डिफरेंस पूछ रहे हैं ना, तो कितना लगे, 4. यहाँ पे भी कितना हुआ, और एक मिस हुआ ना. ओके 1 2 3. यहाँ पे हाँ, वन मोर इधर है. U34 विल बी कितना, 5 टर्म है ना, यहाँ पे 6 टर्म है. यहाँ पे हमें 5 और एक यहाँ पे होना चाहिए. U12 k q square r, U2 U13 k q square, U14 U23 यहाँ पे एक टर्म मिस हुआ है. U23 विल बी U24 वैल्यू विल बी k q naught square by U3 का 4 वैल्यू विल बी, यहाँ पे 4 आता है, 4 रूट 2. इसका डिफरेंस ले लेंगे. सो इज आस्किंग डेल्टा U, UF माइनस UI.
k q naught square by a 4 root 2 plus 2 minus इसका total 3 root 2 minus 2. Option 4. This will be our key. Interaction potential, electrostatics. Interaction potential between the charges. What is the formula? K Q1 Q2 by R. अगर आपको ये formula याद रहे तो then you can manage. There's a basic formula. Okay, we'll take the next question. This question is based on the kinematics. Kinematics based on the velocity definition, like v equal to dr by dt. यहाँ पे हमें position vector. What is the position vector? Position vector r bar equal to phi t square I cap minus phi t j cap. Velocity, the magnitude and direction of velocity, इसको हम differentiate करेंगे. v bar equal to dr bar by dt. जब आप differentiate करेंगे तो इसका 10t I cap minus phi j cap. At t को 2 seconds velocity, direction, magnitude and direction पूछ रहे. 2 seconds. So at t equal 2 seconds, 10 into 2 I cap minus phi j cap. 20 I cap minus phi j cap. Magnitude. So magnitude होगा 20 square plus minus phi square. 400 plus 25 will be 425. ये हुआ इसका magnitude. I think 25 into 5 root 7. 25 into, so 5 root 7 इसका magnitude हो जाएगा. Direction पूछ रहे with negative y-axis. Velocity, the velocity vector is 20 I cap minus phi j cap. This is a velocity vector. Angle theta. So this will A over 20 and this will be 5. So tan theta equal to 20 by 5 will be 4. Tan inverse of 4 it will make with negative y-axis. Or 1 by 4 will be tan inverse of 1 by 4 अल्फा ले लो. tan अल्फा ले लो मीन्स अगर tan अल्फा लेंगे तो इसमें आ जाएगा. सो यहाँ पे तो tan इनवर्स 4 लिख चुके हैं, लिखा है. सो therefore theta is what he is asking with negative y-axis. Option 3 will take it. There's a concept. So आपको a basic definition. Rate of change of displacement is velocity. ये थोड़ा अगर आपको याद रहे तो then by differentiating the position vector we get the velocity. Then what do you mean by magnitude? The like a 5 root 7. आपको पता है vectors, velocity is a vector, so how to calculate the magnitude? We'll take the next. Okay, बच्चों, like this question is based on the kids. This question is based on the rotation mechanics, rolling motion. Rolling on inclined plane. Like these are the basic formulas. यहाँ पे मैं एक solid sphere ले रहा हूँ. Both are having same mass. दोनों का radius same है. एक 1 एक ले रहा हूँ मैं दोनों का इंक्लिनेशन भी सेम है और रोड ऑन इंक्लाइन प्लेन. ओके, दोनों के इंक्लिनेशन सेम है. ए वाज सॉलिड स्फीयर, दिस इज हॉलो स्फीयर.
What is the time taken by them when they reach bottom of incline? इसका अलग सा लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी होगा, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करते हैं. इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, इसका a1 इसका a2. सो हाउ टू गेट दिस एक्सेलरेशन? यहाँ पे mg sin थीटा, रोलिंग फ्रिक्शन f1, यहाँ पे mg sin थीटा, रोलिंग फ्रिक्शन f2, अल्फा 2 दिस अल्फा 1. अगर हमें एक्सेलरेशन पता है तो देन वी कैन मैनेज फर्दर. सो पहले इक्वेशन mg sin theta minus f1 equal to ma1. We are discussing for solid sphere. Solid sphere मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ और ऑलो स्पीयर सम ब्राउन कलर दे रहा हूँ मैं. सो दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा और रोलिंग फ्रिक्शन भी अलग होगा. देन F1 into R is equal to moment of inertia I1 into alpha 1. For pure rolling A1 equal to R alpha 1. यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे mg sin theta. जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस विल बिकम I1 alpha 1 will be A1 by R. So F1 equal to I1 A1 by R square. So moment of inertia, जिसका moment of inertia. So now what is the acceleration A2? डायरेक्टली यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे. I2 plus mg sin theta r square. मास्टर सेम, रेडियस सेम. तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहता है. सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया नो? A1 का कैलकुलेट करेंगे. A1 का mg sin theta r square मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्पीयर. सॉलिड स्पीयर का तो 2/5 mr square प्लस mg sin theta r square. सो यहाँ पे g sin theta r square m r square 5g sin theta by 7. एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्पीयर का. कैलकुलेशन ओह यहाँ पे थोड़ा लाइक A1 इक्वल टू mgr I1 प्लस mr स्क्वायर. ओनली mr स्क्वायर यहाँ पे. देन ओके फाइन. इसका ओनली mr स्क्वायर यहाँ पे रहता है. सो mr स्क्वायर विल गेट कैंसल. सो 5g sin थीटा बाई 7. सिमिलरली A2 का एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑलो स्पीयर. ऑलो स्पीयर का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/3 mr स्क्वायर. सो 3g sin थीटा बाई 2. देन सिलेक्ट आपको यू शुड व्हाट इज दिस क्वेश्चन. आपको एग्जाम में लाइक यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. मैं टीचर हूँ, लाइक आई हैव टू इम्प्रेस. आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मैं ये सब डिराइव कर रहा हूँ. बट इन एग्जाम आप इतना नहीं सोच सकते. डायरेक्टली आपको रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन पता होगा. लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? दिस फॉर्मूला. ये यहाँ से शुरू करना है आपको. फाइन. अगर डायरेक्टली आपको पता है एक्सेलरेशन ऑफ ऑलो स्पीयर कितना, रोलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है? hollow sphere, like a hollow sphere, solid sphere, hollow cylinder rings, solid cylinder and disc. 4 रोलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं. 4 रोलिंग ऑब्जेक्ट्स को जो भी फॉर्मूला से आप याद करें तो डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ईयर. ये भी जरूरत नहीं है आपको. यहाँ से शुरू करते हैं. आप बहुत सारा टाइम यू कैन सेव इट. दिस वाज द रिक्वायर्ड फॉर मेंस. ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको याद रहना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ hollow sphere, एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर. व्हाट इज द फॉर्मूला?
दोनों सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं. So what is the displacement of both the spheres? It will be same. So then we'll take help of the kinematics. Kinematics में what is the formula? L equal to A1 T1 square by 2. L equal to A2 T2 square by 2. T1 by T2. T1 T2 कंपेरिजन यहाँ पे हम इस तरह कर लेंगे. 2L by A1 2L by A2 और A2 by A1. So A2 का वैल्यू विल बी 3 by 2 5 by 7 21 by 10. So T1 सॉलिड स्पीयर ले चुके हैं ना. 21 by 10. So T1 will be greater than T2. Time taken to reach bottom of frame by the solid sphere and also like T1 T2 respectively. A1 हम mg sin theta 2 by 5 mr square 5 by 7 will become A2 by A1. यहाँ पे like 5 by 7 है ना. 5 by 7 A2 will be 3 by 2. 7 3 are 21. Yeah, T1 will be greater than T2. This will be our key. So I want you to remember, so this is very important. अगर आपको डायरेक्टली याद रहे तो देन यू कैन मैनेज लाइक दिस. और वरना आपको इतना सारा कैलकुलेशन डिराइवेशन करना पड़ता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देन फॉर्मूलास दोनों आपको पक्का रहना चाहिए. देन सॉल्विंग PYQ. Okay, kids, बच्चों, like there's a next question. Which of the following figures represent the relation between Celsius and Fahrenheit scale? So this based on the thermometry. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. थर्मोमेट्री यहाँ पे ग्राफ पूछ रहे हैं. सो देन आपको तो पता होगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. व्हाट इज द फॉर्मूला? C/5 F minus 32/9. सेल्सियस वर्सेस फ़ारेनहाइट. सो ये होगा 5F/9 माइनस 5 into 32 will be 160/9. इसका ग्राफ पूछ रहे हैं. लाइक पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट. look at the graph. Y equal to mx minus c. ये तो स्लोप हुआ पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट हुआ नेगेटिव. दिस इंटरसेप्ट विल बी माइनस 160/9. इसका स्लोप हुआ 5F/9. बेस्ड ऑन थर्मोमेट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आपको ये इक्वेशन याद रहे तो कन्वर्टिंग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट देन ओनली पॉसिबल. अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग. दिस बेस्ड ऑन द बेसिक थ्योरी. इसके लिए आपको ब्रेन की आवश्यकता नहीं है. जस्ट गो टू द कॉलेज, लिसन केयरफुली. जो भी टीचर पढ़ाए जितना होता है उतना ट्राई करो समझ पाने के लिए. बाद में जो भी नोट्स लिखते हो वो नोट्स 2-3 बार अगर रिवाइज करे तो देन इट बिकम ईजी. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. किड्स, दिस क्वेश्चन इज, लेट मी रीड द क्वेश्चन. N equal space charges each of value q are placed on circle of radius. सर यहाँ पे charges है. These are the charges. Sir. The circle rotates about its axis. About this axis it is rotating with an angle of omega action. A bigger Amperean loop B encloses. यहाँ पे हमारा एक Amperean loop है. This is enclosing. एंड ए स्मॉल एम्पिरियन लूप. यहाँ पे एक छोटा सा एम्पिरियन लूप भी है. दिस इज द ए. यहाँ पे 2 एम्पिरियन लूप इंडिकेट कर चुके. एक बड़ा वाला बी, छोटा वाला ए. ओके फाइन. एंक्लोज स्मॉल सेगमेंट. द डिफरेंस बिटवीन एंक्लोज करेंट्स. यहाँ पे मैग्नीफिल्ड नहीं पूछ रहा है, ओनली एंक्लोज करेंट्स. सो दिस बेस्ड ऑन द एम्पियर सर्क्यूट लॉ.
The question is based on Ampere's circuit law. Now, what is the idea? Current enclosed. यहाँ पे there's a one ring. यहाँ पे charges है. It is rotating. And it is rotating about this axis. इसका साइज इंक्रीज करेंगे. Yeah, then. Okay, then ये तो ओमेगा हुआ. इसका रेडियस r will indicate. यहाँ पे मैं दूसरा एक एम्पियरन लूप ड्रॉ करता हूँ. And it is a bigger one. For this, यहाँ पे a charge enter हो रहा है, a charge exit हो रहा है. So what is the net flow of charge through this loop will be 0. So यहाँ के IB will be 0. बाद में we are having one more loop. छोटा वाला यहाँ से. So ये एम्पियरन लूप है. इसमें आप अगर देखेंगे तो this charge is living. So there's a net flow of current to this loop. यहाँ पे एक चार्ज एंटर हो रहा है और यहाँ पे बाहर एग्जिट हो रहा है. तो व्हाट इज द नेट फ्लो ऑफ चार्ज फॉर द लूप बी विल बी 0. फाइन. सो यहाँ पे लाइक ए चार्ज और वी डिफाइन चार्ज डी क्यूब बाई डी टी. डी क्यूब बोले तो एन क्यू. डी टी विल बी 2 pi by omega. So n q omega by 2 pi. इसका डिफरेंस पूछ रहा है. आई ए माइनस आई बी. आई ए तो वैल्यू एन क्यू ओमेगा बाई 2 पाई है. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई बी? आई बी का वैल्यू तो 0 है ना, बिकॉज जितना जो चार्ज यहाँ पे एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज यहाँ पे एग्जिट हो रहा है. सो नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द लूप बी इज 0. सो वाई इट इज नेट flow of charge through loop B is 0. That's why, therefore, I B is 0. Net flow of charge through the loop is non-zero. That's why the current is non-zero. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं पूछ रहा है. ओनली अबाउट द नेट करंट एनक्लोज्ड. दिस वन बेसिक थिंग्स. अगर आप एम्पियर सर्किट लॉ फॉर्मूला याद कर लेंगे तो दिस थिंग इसके बारे में पूछ रहे हैं. आई नेट जस्ट बेस्ड ऑन बेसिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. द चैप्टर नेम इटसेल्फ यहीं पे है. इट्स बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मैटर वेव्स, रेडिएशन मैटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ चैप्टर. फोटो electric effect. In a photoelectric, the stopping potential V0 versus frequency curve is plotted. H is Planck's constant. V0 versus V. V means here यहाँ पे frequency. V0 means stopping potential. So some basic information पूछ रहे हैं. So what is a photoelectric effect? What is the formulas? Like a energy of the K max. K max should be equal to Sc by lambda or H nu minus work function. K max means charge E into stopping potential. This is the frequency. V naught equal to H nu E minus work function by L. Slope of V naught versus V
करेक्ट ऑप्शंस के बारे में पूछ रहे हैं. V naught versus V is a linear graph. V naught versus V is a linear graph. So can we pick up the option A? Yes, correct. It's a linear graph. The slope of V naught versus curve is pi naught h. Wrong statement, no? ये तो ग्राफ तो इस तरह होगा. पता आपको शायद याद होगा. The graph will be okay. Agreed. There's a ruled out. H constant related to slope of V naught versus V. Yeah, इसका slope. So what is tan theta? H by E. Yes, this is a correct statement. Then the value of H is not required to determine H using V naught versus V. Wrong state. The work function can be estimated without knowing the value of H. Okay, यहाँ पे intercept अगर आपको हमें ये पता है, then without value of H we can calculate this work function. This is also correct statement. So A, C, E. दिस अ प्योर theory है. ये तो फोटल का इफेक्ट डायरेक्टली जो भी आप theory पढ़ चुके अगर वो याद रहे तो then you can manage this very easily. Revising, reading teacher notes is something very 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 important. Okay, next question. Now this question is based on thermodynamics. And then what is like is asking about the heat exchange in cyclic process. यहाँ पे आप देख रहे हो like the magnitude of heat exchange by system for given cyclic process ABCA. Process यहाँ से pressure versus volume graph में. So the process will start from here A B C A. यहाँ पे आप सेमी सर्कल देख रहे हो. This is the process. Area under this curve will give the work done. So हमें यहाँ पे we have to calculate this area. कितना एरिया हमें ये जो सर्कल है इसका एरिया चाहिए हमें. What is the area of circle? Of work done equal to pi r square by 2. Pi 1 r will be 400 minus 200 by 2. इसका वैल्यू r एंड r. डायमीटर कितना है 400 माइनस 200. इसका रेडियस कितना होगा हाफ ऑफ इट. दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 हम लगा रहे हैं. देन इसका डायमीटर कितना है 400 माइनस 200. So one radius will become half of that one. By 2. यहाँ पे यूनिट्स एक बार चेक कर लेंगे. इसका है किलो पैस्कल. सो इसका प्रॉब्लम नहीं है. किलो मीन्स इंटू 10 टू पावर ऑफ 3. यहाँ पे हम बाद में वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ. एरिया एंड पीवी ग्राफ. इसका वॉल्यूम देखो. इट्स इन क्यूबिक सेंटीमीटर. इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है लाइक एंड ऑल. सो व्हाट इज अ कन्वर्शन वी नो लाइक ए 1 cubic centimeter. So 10 to power of minus 6. Okay, we'll calculate this. This will be pi. यहाँ पे हमें 200 by 2. यहाँ पे 100 मिलेगा. यहाँ पे 10 3. यहाँ पे 100 into 10 to power of minus 6 all divided by 2. 5 pi.
This will be in joules, SI unit, so it will be in joules. Now what is the concept यहाँ पे? Area under PV graph equal to area in PV graph will become equal to work done. सभी को पता होगा ये डेफिनेशन, बस अप्लाई करो, इससे ज़्यादा क्या पूछा यहाँ पे. We'll take the next question. But this question is based on the ray optics. Based on the convex lens concept. The photograph of a landscape is captured by a drone camera at a height of 18 kilometers. The size of camera film is, means where the image is from, this will be like a screen, and the area of landscape photograph, this is the object, the focal length of the lens. यहाँ पे हमें like a, we'll go for small basics. ये वाला लेंस है ना, दिस द लेंस, रफ डायग्राम. यहाँ पे हमारा फिल्म है, and this is the area which is photographed. यहाँ पे लेंस I'll draw here. इसका 2 सेंटीमीटर, 400 किलोमीटर स्क्वायर, 400 kilometer. So this is the object distance, 18 kilometer. This is the image distance, पता नहीं, 14. We have to calculate. यहाँ पे जो एंगल हमें मिलेगा, this will be theta. Height of the object. इसको हम एक काम करेंगे. This is the height of the object. This is the height of the image. Directly you go to the ray optics. हमें ray optics में we have the formula magnification equal to V by U, which is equal to height of the object by height of the image by height of the object. यहाँ पे height of the object कितना है? 400 किलोमीटर, 200 हो जाएगा वो, half of it, no? Okay, fine. Height of the object कितना है? 1 सेंटीमीटर. सर यहाँ पे 400 आप 200 क्यों लिख रहे हो? So this is the like a 2-dimensional, like अगर 3-dimensional में it will be like this. यहाँ पे लेंस है and this is the film. Okay, this is the land and this is a film. Okay, ये जो लेंथ है, this length will be 400 किलोमीटर. So इसका हाफ लेंथ कितना होगा? 200 किलोमीटर. साइज ऑफ द फिल्म कितना है? डायमेंशन स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर है. So इसका हाफ ऑफ इट 1 सेंटीमीटर. So 200 into 10 to power of 3 by 1 into 10 to power of minus 2. So 200 into 10 to power of 5 or 2 into 10 to power of 7. ये वो हमारा मैग्निफिकेशन. देन यहाँ पे हम थीटा डिफाइन करेंगे, tan थीटा h0 by 18 kilometer. This should be equal to hi by v. Height of the this will be 200 kilometer. यहाँ पे 18 kilometer. hi will be 1 centimeter. So v is equal to
18 by 200 centimeter. 9 by 100 centimeter or 0.9 centimeter. This is the value of V. U का वैल्यू कितना है 18 किलोमीटर. तो now we can find out the focal length. 1 by V minus 1 by U equal to 1 by L. So total V का वैल्यू तो 0.09, U का वैल्यू minus 18 किलोमीटर. किलोमीटर means this will convert into meter. So this will become 9 into 10 to the power of minus 4. Now we'll calculate the focal length. इसका focal length value कितना होगा? F equal to करीब 1.8 centimeter. It'll come nearest. Just check the calculations. Okay, fine. So these are some. सर like ये थोड़ा समझ में. This is the lens. A वाला lens है. A वाला film है. This is the land area. अगर आप रे डायग्राम यहाँ से रेस इस तरह जाएंगे लैंड यहाँ पे पास होके देन दिल फॉर्म द इमेज हियर. दिस इज सम रफ डायग्राम. यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ. There's a basic formula. Magnification will be V by U. Area magnification OB use कर सकते और directly we can take help of this one. Okay, next question I'll take it. And this question is based on the logic gates. यहाँ पे like is asking about the output of circuit is low for. यहाँ पे हम एक काम करेंगे 0. This is XY. This is A or gate. बाद में this one was like a NOR gate. ये तो OR है, ये तो NOR gate है. Then X plus Y. So what is the output? Output will be Z equal to कौन सा values के लिए ये 0 होगा? X0, Y0 will be 0, will be 1. Possible. The output of circuit is low. Then बाद में X का value 0 है, Y का value 1. This will be 1 comma, this will be 0. 1 plus 0 will be 1. 1 complement will be 0. 1 plus 1 whole complement will be 1 complement. 1 complement will be 0. I think it will be 0 for X equals 0, Y equals 0, it will be 1. ए छोड़ के बाकी हर एक इनपुट के लिए आउटपुट Y will be 0 only. B C D कहाँ पे है? B C D, this one. Like a NOR gate, the concept of like a NOR gate, अगर तो याद रहे तो then you can manage this very easily. This question is based on this one Newton's laws of cooling, and this is out of syllabus. Will be deleted. No need to discuss this one. It's there for JEE Advanced, not there for JEE Mains.
Okay, why to waste time? Let's take the next one. The energy and momentum P of a moving body of mass related, given that E represents the speed of light directly, the correct equation यहाँ पे पूछ रहा है like I think आप एक बार एनर्जी इक्वेशन ले लो E equal to hf is c by lambda. Momentum will define m into v, mass into velocity. So यहाँ पे okay this E equal to mc square हो गया, but this one is how to justify that one. Mass का like a what is the momentum kinetic energy, what we can write mv square by 2 or mv whole square by 2m. K kinetic energy. So where all mass is there, if you want, you can replace with energy. No, this K is nothing but energy. यहाँ पे हम एक काम करेंगे momentum in terms of energy. How we can like energy we have to replace this one. So E equal to mc square E equal to h by lambda. यहाँ पे like a momentum equation we have to bring it. So what we do is then यहाँ पे like E equal to mc square. तो यहाँ पे हम m को रिप्लेस करेंगे p by c. So this will come pc and what is the sc by lambda. So what is the momentum h by lambda. Okay, there's one basic formula for momentum in terms of wavelength. We can use this particular formula. So E can we write it as P into C. ये तो already यहाँ पे देख चुके हैं ना. So I think which is option E equal to mc square. So if you square energy, then if you square energy, P square C square. This idea is very important. Momentum in terms of wavelength also you can express. This next question we have: a small uncharged conducting sphere is placed in contact with identical but having 4 into 10 to the power of minus 8 coulomb charge and then removed to a distance such that the force of repulsion between them is the distance between them is. So this question is based on the electrostatics. This question is based on electrostatics. So here we'll assume like this. They're in contact. The two spheres they are in contact. इसका radius a रख देंगे. इसका charge q था पहले. A neutral. बाद में like when they come in contact, so actually it is like this. When they come in contact, then there'll be charge conduction will take place. So the charge will become equal as the radius are equal. Now they are separated. They are separated to some distance. यहाँ पे थोड़ा distance का एक कर लेंगे. They are separated to some distance x. What is that separation? यहाँ पे force of repulsion कितना between the spheres? F. So first conduction occurs
when this first sphere comes in contact with the neutral sphere, charge sphere comes in contact, conduction occurs. The charge will get distributed equally because यहाँ पे charge q by 2 है. So to become potentials equal, the charge will become q by 2 and q by 2. Okay, fine. Then the separation kitna now? Like some distance. This distance x we have to calculate. What is the formula? F equal to k q by 2 q by 2 x square. K का value 9 into 10 to power of my 10 दे चुके हैं. Q by 2. So Q value is Q square by 4 होगा total. Q square का value 4 into 10 to power of minus 8. यहाँ पे लगे distance कितना है separation, the distance between them, that we have to calculate. This x is unknown. Then force कितना है 9 into 10 to power of minus 3. Okay, when you substitute solve all this, we'll end up this equal to 2 centimeter. Okay, fine. तो अगला क्वेश्चन ले लेंगे. A particle oscillates along the x-axis according to the law x of t equal to x naught sine square t by 2, where x naught 1 meter. The kinetic energy of particle as a function of x is correspond correctly represented by the graph. So this question is based on the SHM, simple harmonic motion. SHM, or what you can call this as oscillations. So what is the equation? X equal to x naught sine square t by 2. Kinetic energy पूछ रहे हैं, so we'll differentiate, we'll get velocity. X naught 2 sine t by 2. Derivative of sine t by 2 will be 1 by 2 cos t by 2. So this will become x naught sine t by 2 cos t by 2. यहाँ पे हम x2 adjust कर लेंगे. So this will become x naught by 2 with a velocity. Kinetic energy बारे में पूछ रहे हैं. So kinetic energy is given by half mv square. Kinetic energy. So इसका m by 2 x naught by 2 sine square sine 2 theta. इसका स्क्वायर कर लेंगे. Then this will become m x naught square by 8 sine square 2 theta. Sine square तो इसका तो नेगेटिव वैल्यू. So put t equal to 0 will be 0. Put t equal to 1 by 2. T equal to 1 by 2 will be maximum. Put t equal to 1 sine 2. Put t equal to 1 by 2 as a function of x पूछ रहे हैं ना, not time. As a function of x, it is x not equal to 1 x of t. इसका like as a function of x पूछ रहे हैं. Then sine square t by 2 is come in terms of this, we'll replace it. Like this, some correction is there. This is sine will become 2 will not be there here. Sine 2 theta formula. So this will become sine square theta. इसको हम x में कन्वर्ट कर लेंगे. Okay, fine. Okay, बच्चों, like this will become x not equal to 1 ab. So this will become m by 8 sine square theta. Kinetic energy is a function of time, but kinetic energy is a function of position चाहिए. Okay, what we do is like this x equal to x naught sine square theta. This will become 1 minus cos t whole divided by 2 x naught by 2
So इसका displacement will be, the maximum displacement will be at t equal to 1 ना. इसका यहाँ पे हम substitute कर लेंगे. This will become cos theta का value चाहिए हमें. So this will become x minus x naught by 2 equal to x naught by 2 cos theta. Integrity will be m by 8. This will become 1 minus cos square theta. M by 8 root of 1 minus cos square theta value. इसका value होगा 1 minus 2x minus x naught by x naught whole square. इसका next step will be m by 8 x naught will be x naught square 4x square minus x naught square plus 4x x naught. Total simplification, this will become k equal to m by 8x naught यहाँ से हम 4 भी निकाल देंगे. m 4x naught, इसका वैल्यू होगा x naught माइनस 4x स्क्वायर. ये तो इसका ग्राफ ए वाला होगा. little bit mathematically, this is a concept. यहाँ से हम काइंड एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन चाहिए हमें. This is based on, let me read the, this is based on YDSC and polarization. यहाँ पे in Young's double slit experiment, 3 polarizers are kept as shown in figure. The transmission axis of P1, P2 are orthogonal, P1, P2. The polarizer P3 covers both the slits. यहाँ पे slit है. This is the polarizer P3. Transmission axis of P3 is 45 degree to those of P1, P2. The intensity at a point after P3 where the path difference between light waves from S1, S2 is lambda by 3. This is based on the basic YDSC. एक हम पहले एक काम करेंगे. पहले YDSC का बेसिक डायग्राम विल ड्रॉ इट. यहाँ पे स्लिट 1 है, यहाँ पे स्लिट 2 है एंड पोलराइजर. यहाँ पे एक पोलराइजर P1, यहाँ पे एक पोलराइजर P2. बाद में पोलराइजर P3 यहाँ पे, then light will be incident. यहाँ पे भी लाइट इंसिडेंट है. It will pass through the slit. Somewhere at this point P, we have to calculate the intensity. जब पोलराइजर P1, P2 इसका इंटेंसिटी कितना होगा I नॉट. जब ये पास हो जाता है स्लिट से, इसका इंटेंसिटी कितना होगा I नॉट बाई 2. I नॉट इसका इंटेंसिटी जब स्लिट से पास हो जाएगा ना, पोलराइजर से जब वो पास हो जाता है, देन इंटेंसिटी विल बिकम हाफ. देन ए पोलराइजर P3 है, इसका पास एक्सिस कितना है 45 डिग्रीज. तो इसका इंटेंसिटी कितना होगा नाउ I नॉट बाई 2
कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसका इस रे का इंटेंसिटी कितना होगा, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 होल स्क्वायर, इसका इंटेंसिटी विल बिकम ए होगा आई नॉट बाई 4। इसका इंटेंसिटी कितना होगा, आई नॉट बाई 4। यहाँ पे मैं एरोस डाल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब एरे इस पोलराइज से पास हो जाता है ना, तो देन इसका इंटेंसिटी हाफ, इट विल बिकम हाफ आई नॉट बाई टू। दिस लाइट, इसका इंटेंसिटी कितना है, आई नॉट बाई टू, एंड इसका पास एक्सिस विल मेक 45 डिग्री। अकॉर्डिंग टू मैलस लॉ, intensity of incident light into cos square of the angle between the pass axis. So 45 degree, cos square 45 degrees, cos square 45 degree I naught by 2, cos square 41/√2 whole square will become I naught by 4. Okay, agree this. So now we'll work out the problem. Intensity at point P is equal to I naught by 4, I naught by 4 plus 2 root I naught by 4, I naught by 4 cos phi. I naught by 4, this will become I naught by 2. 2 I naught by 4 it will become cos phi. What is the phase angle? But path difference कितना है? इसका path difference 2 pi by lambda. Lambda by 3, they're given a delta x. So 2 pi by 3 cos of 2 pi by 3 यहाँ पे लगा दो. So this will become I naught by 2, I naught by 2. Cos 2 pi by 3, cos 120 will become minus 1 by 2. इसका वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे. दिस विल बी आई नॉट बाई 2 माइनस आई नॉट बाई 4. इसका वैल्यू होगा आई नॉट बाई 4. दिस योर आंसर. की थोड़ा इन मिस्टेक, इट विल बी 2. हाँ, वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम. लाइक यू हैव ब्रॉट यहाँ पे वाईडीएस एंड पोलराइजेशन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे पूछ रहे हैं. दिस वेरी गुड प्रॉब्लम. The resultant intensity at point P where path difference is 2 pi by 3 between the waves. I'll take the next question. This question is based on the solenoid, moving charges and magnetism. सोलोनाइड कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे हमें एक चार्ज है जो यहाँ पे मूव हो रहा है. फाइन. इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसका वेलोसिटी v लेंगे. मैग्नेटिक फील्ड b बार, इसका वेलोसिटी b बार आउट ऑफ द प्लेन ले लेंगे. देन फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस वन. इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा, m omega square r equal to f. Will provide the centripetal force. The centripetal force is provided by the magnetic force. And what is the magnetic force? यहाँ पे magnetic force हम कितना, QVB. V what will write, omega. So omega equal to कितना, BQ by M. ये तो आपको शायद याद रहेगा. Then omega we can write it as 2 pi by T. अगर फॉर्मूलाज याद रहे तो डायरेक्टली यू कैन मैनेज लाइक दिस. इसका वो टाइम पीरियड. देन इट्स कहाँ पे रोटेट हो रहा है. सो दिस इज रिवॉल्विंग इन ए सोलोनाइड. यहाँ पे विल एज्यूम ए सोलोनाइड. एंड सोलोनाइड में मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलोनाइड का.
यहाँ पे वो चार्ज रोटेट हो रहा है and it will produce a magnetic field. So this magnetic field is mu naught Ni. ए बी वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 2 पाई बाय क्यू टी म्यू नॉट एन के बारे में पूछ रहा है. सो व्हाट इज एन इज इक्वल टू 2 पाई एम क्यू टी म्यू नॉट आई. जो भी वैल्यूज है सभी यहाँ पे डाल दो. Then we'll get number of turns per unit length, number of turns per unit meter. This is what he is asking. Mass of the electron, he has given mass of electron, charge of electron. Oh, यहाँ पे substitute करो. Mu naught value भी आपको पता है. That also they given, and time period also they given. Substituting all here. A very good question. Huh? Okay, fine. Huh? Something is, this charge is revolving inside the solenoid, and because of this magnetic field is moving in a uniform circular path where this r is a radius. ये जो formulas तुमको याद रहना चाहिए. I will take the next question. This is based on the dynamics of circular motion. यहाँ पे pendulum है. It is revolving in circular path. The mass makes 3 pi by rotations per second. So हमें यहाँ पे omega b. Then will provide required centripetal force. Rough diagram. This is a tension mg and a wala theta. So this will be like this: t sin theta, vertical component t cos theta. So t sin theta, horizontal component will provide required centripetal force. ये टेंशन के बारे में पूछ रहे हैं. रेडियस इज कैपिटल आर. इसका लेंथ भी दे चुके हैं. ओके, टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय साइन थीटा. The tension the string is in terms of m and l. So यहाँ पे sin theta will define it. Sin theta will be r by l. Omega square ml. Omega, the mass makes 3 pi by rotations per second. 3 pi by rotations per second. तो इसका मीनिंग क्या है? लगे 3 पाई बाई रोटेशन. वन रोटेशन में कितना है? लगे 2 पाई रेडियन. यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड. थ्री बाई पाई रोटेशन पर सेकेंड. डायरेक्टली ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे है 3 पाई. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ट्वेंटी 22/7 होल स्क्वायर ml. रोटेशंस वी हैव टू, यहाँ पे 2 पाई एडजस्ट करना पड़ता है. The mass makes 3 pi rotation. One rotation कितना है? 2 pi है. So this will become 3 whole square. 3 2 just 6 6 36. And simple. यहाँ पे rotations में like I didn't make observation. 2 pi यहाँ पे adjust करें. 3 pi rotation. One rotation is 2 pi radian. This question, the ratio of power of light source S1 to that of light source S2 is 2. S1 is emitting 2 into 10 to the power of 15 photons per second at
600 nanometer wavelength. The wavelength of source S2 is 300 nanometer, then the number of photons emitted by source S2 is. So यहाँ पे this is based on photoelectric effect. Again they've asked them. Okay, fine, no issue. Now, what is the formula? Number of photons emitted by source equal to power of source by energy of photon. Power of source, energy of photon, Sc by lambda. First N1 will be P1 by Sc by lambda 1. So this will become P1 lambda 1 by Sc. The number of photons emitted by S2 will be P2 lambda 2 by, इसको डिवाइड करेंगे N2 by N1. S1 is emitting 2 into 10 to the power of 5. The ratio of power of light source S1 to that of light source S2 is 2. Lambda 300. S2 is 300 nanometer. This is 600 into 10 to the power of minus 9. Now we'll get answer 5 into. There's a definition. ये आपको पता होगा. Number of photons emitted by the source is equal to power by energy of photon. मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ. Number of photons emitted by source per second equal to power of source, light source by energy of photon. This is the basic definition of photoelectric effect में. इससे आप easily इस problem solve कर सकते हैं. I think is asking simple based on the simple concepts and their definitions. कोई भी लगे anything, energy of photon आपको पता है Sc by lambda, then all problem solving. तो बिना तेरी बिना फॉर्मूला अगर आप PYQ कर रहे हो, it's no use. So as your आपका एग्जाम डेट जैसे जैसे अप्रोच हो रहा है, you have to read more concepts. Concepts means रिवाइज कर लो. अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, then only you can do something. अगर आपको ये पता नहीं what is the power, what is energy, then what is use of doing PYQs? तो पहले थ्योरी पढ़ो, अपने आप को चेक कर लो. लाइक आपको ये पता है, थ्योरी नहीं पता है, सो पढ़ लो. थ्योरी पढ़ने के बाद फॉर्मूला याद आए, ओके मेमोराइज फॉर्मूला, देन सॉल्व PYQ. ये तीनों बैलेंस करना पड़ेगा आपको. एवरीडे यू हैव टू रीड थ्योरी, every day you have to read formulas, every day you have to PYQ. There's a strategy very important. We'll take the next question. And this problem based on elasticity. यहाँ पे what is the concept? The increase in pressure required to decrease the volume of water sample by 0.2% is bulk modulus of water. Definition क्या है? Bulk modulus equal to minus dP by dV by V. Increase in pressure पूछ रहे हैं, so delta P पूछ रहे हैं, dP और आपका मर्जी, आप कौन सा तो symbol. Volume decreases, so that will be definitely will be negative. So bulk modulus value 2.15 into 10 to the power of 9 minus delta P. Decrease in volume 0.2%. 0.2 by 100 V by V. Solve for delta P. I will get the answer. I will take the last one. Acceleration due to gravity on the surface of the earth is G if the diameter of earth is reduced to 1/3 of its original value and mass remains, and then acceleration due to gravity on the surface of the earth. Like a
acceleration due to gravity, gm by r square. The diameter is reduced to 1/3 of its original value. इसको हम diameter में लिखेंगे. Diameter will become half of the radius. So कितना होगा 4gm by d square. Mass remains unchanged. Mass as it is. Diameter कितना? Diameter of reduced to 1/3. 1/3 means ये कितना होगा 9 into 4gm by d square. G dash. Okay, fine. Kids, the paper is moderate and lengthy. That's why the score will not be that good. यहाँ पे. Okay, fine. Next video I'll update you about the strategy for mains. April mains के लिए what has to be done. Okay, thank you all of you. Thank you for great support. So do revise. Those who are preparing for JEE mains, the strategy is like a read theory, revise formula, solve PYQ. Those who are preparing for advanced, read theory, you must remember formula. Don't work out the PYQ of advanced. You can solve some AITS or any textbook like Cengage, work out problems per chapter 100. Keep target or 50. Think on them. Or if you're having teacher notes, revise them. So it should be like a revision 50%, new problems should be 50%. This should be strategy. Okay, in videos I'll update how to prepare for advancements, coming videos. Okay, thank you all of you. Thank you.